हाय गुड मॉर्निंग सो मुझे कहीदेक चाहे कि आमर ये चैनल रे आम गोटे नुआ प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जाऊे जोटा कि बेसिकली जो मैंने इकोनॉमिक्स को चूज कर एज देयर ऑप्शनल पेपर ओके तो से ये चैनलटा डेडिकेटेड सो एम इकोनॉमिक्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट को विल लर्न इन डेप्थ सो बेसिकली ये सब वीडियो रे जेहेतु आम वी आर गोइंग टू राइट आवर पेपर इन इंग्लिश सो आई विल learn or I will teach or I will describe, explain all these concept in English. No worries, I will take the help of Odia language also. But basically, all this video will be on English with help of Odia. Because तमने सब जे सब ऑप्शनल पेपर नब यू हैव टू राइट इन इंग्लिश सो आम जब इंग्लिश रे डिस्क्राइब करवा देन इट विल बी बेटर फॉर यू व्हाइल राइटिंग योर पेपर ओके सो बेसी आउट टाइम वेस्ट करनी विल स्टार्ट आवर लेसन सो आज आमर जमी टॉपिक अच्छी यू कैन सी इन आवर स्क्रीन इट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके सो यू नो आई मुझे +3 फास्ट ईयर इकोनॉमिक्स जॉइन कर मोर बेसिकली मोर ऑफिस छुट्टी रोचे बिंग आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मो ऑफिस सैटरडे संडे छुट्टी रोचे सो बेसिकली मो सैटरडे जाऊँ क्लास करने दो मो पीजी पास आउट इन आईटी सो सिविल सर्विस भावुची आई विल स्टार्ट लर्निंग economics and other things so it is a better decision to join +3 as economics so okay let's start elasticity of demand okay so when we are talking about elasticity so basically जब आम elasticity ऊपर कथा होचे तो elasticity means you are trying to stretch something तुम मैंने गोटे जिनस को जिते भिड़बार जो जब गोटे जिनस तार ओरिजिनल शेप एत बड़ अच्छी ताको आम स्क्वीज करें आई मीन छोट करें कि आम स्ट्रेच करें आई मीन लंबा करें देन वी कैन से यस दिस इज ए इलास्टिक आइटम I mean it has some elasticity. I mean it has the capacity to change its shape. Okay. आर गोटे कैपेसिटी अच्छी यार शेपटा को चेंज करिया को जमते हमें एटा ओरिजिनल शेप देखले जते हम स्क्वीज करछे इट रिड्यूस इट्स साइज द साइजटा को से रिड्यूस कर दोचे जते हम तो टाणुचे इट एनलार्जेस इटसेल्फ से ताको निजको निजे एनलार्ज करै दोचे ओके बट आम सब चिंता करवा विल थिंक इन डेप्थ सो ये जो आइटमटा सपोज दिस इज ए रबर आइटम ये आइटमटा निजे निजको चेंज करनी आर जो चेंज करुचे सम एक्सटर्नल फोर्स जमती कि तमें मत ठंडा हो जाए सो माय वॉइस इज नॉट सो मच क्लियर सो ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज विथ माय वॉइस टुडे सो जिते आम रबरटा को स्ट्रेच करने चाहूचे सो आमको किसी फोर्स देवाई पड़े सेमती मार्केट रे जिते सब इलास्टिक कमोडिटी अच्छी से निजे निजर तो प्राइस चेंज करेंगे कि डिमांड चेंज करेंगे सो सम एक्सटर्नल फोर्सेस इट मे बी ए डिमांड साइड चेंजेस और इट मे बी ए प्राइस साइड अफेक्ट सो आइदर डिमांड रो चेंज जो इलास्टिसिटी होता पारे कि प्राइस रो चेंज जो इलास्टिसिटी होता ही पारे कि बोथ रो चेंज पर इलास्टिसिटी होता ही पारे सो इलास्टिसिटी जो आसूची से आम चिंता करवा जे इट इज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ एन आइटम टू चेंज इट्स ओरिजिनालिटी जहाँ अच्छी ता धीरे जब किसी परिवर्तन हो देन वी कैन से एस इट इज ए इलास्टिक आइटम सो आम जो ये लेसनटे नहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने आम चाहूँ जे डिमांड रो केते इलास्टिसिटी अच्छी तो सेटा को आम आज ये वीडियो रे स्टडी करवा करेक्ट ओके सो बेसिकली ये जो लेसन बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ओके सो जदि मुझे गोटे मैथमेटिकल डेफिनेशन देवी सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आम कह मैथमेटिकली हाउ शुड वी रिप्रेजेंट दैट इन मैथमेटिकल फॉर्म इट इज द चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी चेंज इन डिमांड in quantity divided by change in price of that particular commodity okay change in demand okay change in demand divided by change in price okay जदि मैं शॉर्ट लिखी change in demand I mean quantity divided by change in price clear so तार अर्थ हो जे गोटे पर्टिकुलर कमोडिटी रो प्राइस जदि चेंज हो ओके इट मे बी इनक्रीज करें प्राइस और डिक्रीज करें बट समथिंग चेंजेस जदि किसी चेंज हो चेंज रो प्रभाव रे आमर क्वांटिटी बा डिमांड रे कौन चेंज हो चेंज इन प्राइस प्राइस रो चेंज हाउ इट इज अफेक्टिंग द चेंज इन डिमांड आई मीन क्वांटिटी रो केते चेंज हो तो सेटा को आम मैथमेटिकल स्टडी करुचे बाय थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके सो बेसिकली ताको मैथमेटिकल करी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड आई मीन क्वांटिटी
चेंज इन डिमांड को आम क्वांटिटी चेंज को आम डेल्टा क्यू रे रिप्रेजेंट करवा और चेंज इन प्राइस को आम रिप्रेजेंट करवा डेल्टा पी. ओके इन रेस्पेक्ट टू ओल्ड प्राइस आर ओल्ड प्राइस केते थिला सपोज दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी चेंज इन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू ओल्ड प्राइस. ओके सो सेटा को आम से जो स्टडी को आम कहूचे दे इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी करेक्ट. ओके फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी जो प्राइस सपोज 10 थिला क्वांटिटी सपोज 50 करेक्ट. जदि प्राइस 11 है सपोज से क्वांटिटी डिमांडेड है 40 एनीथिंग यू जस्ट टेक सम आर्बिट्रेरी वैल्यूज. ओके सो ये जब मुझे चेंज इन प्राइस बाहर करी बिकज चेंजटा सब आइदर जीरो हो पारे ना तो पॉजिटिव हो पारे चेंजटा को नेगेटिव कहीपर कहीं कहूँ जस्ट थिंक इन डेप्थ. सपोज मुझे कहि प्राइस 10 टंका थिला प्राइस चेंज होकर 11 टंका है कि प्राइस 10 टंका थिला प्राइस चेंज होकर आइदर 11 टंका है ना आइदर 8 टंका है. ये प्राइस केते टंका चेंज होती 2 टंका चेंज होती ये प्राइस केते टंका चेंज होती टंकाटा चेंज होती तुम कहबनी ये माइनस 2 टंका जेहेतु कमी कि ये बढ़ी जेहेतु प्लस 1 टंका चेंज चेंज इज जस्ट ए होल नंबर. ओके इट इज ए पॉजिटिव होल नंबर either it may be zero or it may be any positive value. It can't be negative. Change cannot be negative. Okay okay so एटी हम यदि देखा चेंज इन प्राइस इज 1 rupee 1 आउ चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 10. सो आम फॉर्मूला अनुसार मुझे स्क्रीन टाक इरेज कर दूसरी जस्ट 1 सेकेंड सॉरी ब्रश. ओके इरेज कर दूसरी हाँ करेक्ट. So here you can see the change in price is 1 rupees. First delta Q. Okay. So delta Q it is 10 rupees. Delta Q is change in quantity is 10. So I will put 10. Delta P is 1. So I will put 1. Then divided by Q. Delta Q by Q. Old price old quantity केते थिला 50. So 50. 1 divided by P. Old price केते थिला 10. Okay. So 10 by 50. डिवाइडेड बाय 1 by 100 आपको आम सिंप्लीफाई करवा तो कौन हम ये लिखे दूसरी टी स्क्रीन छोट अच्छे. सो जस्ट ट्राई टू मैनेज करेक्ट. सो 10 by 50 डिवाइडेड बाय 1 by 100 1 by 10. सो यटा को तुम जिते गोटे फ्रैक्शन आउ गोटे फ्रैक्शन से डिवाइड हो तल फ्रैक्शनटा उल्टी जीव आउ डिविजन अच्छी से गुणी हो आउ तल फ्रैक्शनटा ऊपर पड़े तो ऊपर के 10 by 50 इंटू डिविजन अच्छे यहाँ सो इंटू करदेली 1 by 10 अच्छी उल्टी जीव सो 10 by 1. सो एवं 0 0 कटिगला 0 सॉरी 0 0 0 कटिगला सो 10 by 5 10 by 5 मैंने मीन्स 2. सो ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आसीगला 2 करेक्ट. सो एबे आम देखा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री. सो आम देखिले जमती द इलास्टिसिटी शुड बी either positive either zero or it may be positive or sometimes it may be negative. Okay so depending upon the value of elasticity we just classified the elasticity into many types. Okay so आपन जतबेले पढ़िथिबे नंबर चार्ट जतबेले आपन हाई स्कूल में पढ़िथिबे so it is starting from negative then 0 then 1 then a big positive number 1 2 3 4 5 6 up to anything then it is infinity. I mean highest positive value. As we know there is no largest number. आम जानिचे जमती कि largest number बोली किसी नहीं जो संख्या कहिबे तार जदि म गोटे 1 मिसै देबी it will be largest then it will be larger than the previous one. So basically आम जेहेतु आम पाखे सबुठ बृहत्तम संख्या नहीं तो आम से इनफिनिट करुचे. इनफिनिट सब रिप्रेजेंट करे इट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ सबुठ बृहत्तम पॉजिटिव संख्या को इनफिनिटी रिप्रेजेंट करे. सो जिते नेगेटिव होची व्हेन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज नेगेटिव बा इट इज लेस देन 0. जिते लेस देन 0 होची ताको आम कौन कहूचे जति लेस देन 0 होची ताको आम कहूचे लेस इलास्टिसिटी. आउ जिते 0 होची ता माने किछि इलास्टिक होनी तो आम तो कौन कहवा परफेक्टली इन इलास्टिक. ओके जेहेतु आर 0 हो गला
तो आम जाने जमी डेफिनेशन अनुसार कौन चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ताने प्राइस चेंज क्वांटिटी चेंज को जब अफेक्ट करूनी ताने जीरो ओके आम तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर टाक पढ़ा गोटे बाय गोटे वीडियोटा मे भी लेंदी हो पारे मुझे 2 पार्ट्स अपलोड करें सो जदि जीरो हूँ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आम कहे परफेक्टली इनइलास्टिक जदि 1 हूँ आम रिप्रेजेंट करुचे यूनिटरी इलास्टिसिटी इट इज ए न्यू टर्म दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी करेक्ट यूनिटरी इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी जदि 1 रु एनीथिंग एनी पॉजिटिव नंबर हो तो आम कौचे कौन परफेक्ट सॉरी हाईली इलास्टिक या करेक्ट हाईली इलास्टिक जदि इनफानाइट हो तेबे परफेक्टली इलास्टिसिटी जदि लेस नेगेटिव जाऊँ लेस इलास्टिसिटी जदि लार्जेस्ट इनफानाइट पर्यंत जाऊँ परफेक्ट इलास्टिसिटी जदि 1 ठारू इनफानाइट भितर भ्यारी करुँच तेबे हाई इलास्टिसिटी जदि 1 हो एक्जाक्टली 1 देन ताको कहे यूनिटरी इलास्टिसिटी जदि 0 हो कहे परफेक्टली इन इलास्टिसिटी करेक्ट so basically the elasticity if you see the definition or mathematical formula of elasticity that is delta q but change in quantity or change in demand as per the change in price I mean how the change in price is affecting the change in demand so एटा mathematical जदि हम भाविबा जदि आपको आउरी स्मॉल कर दूँ q by p easy to understand जो तुम एग्जाम रे लिखिबो then you should write delta q by delta p but for your understanding purpose I am writing it is in simply form that is q by p q is quantity and p is price correct so एटा केतेबेले जीरो होबो जदि जदि q टा जीरो होबो then 0 divided by anything will be 0 divided by 80 so it will be 0 divided by 180 it will be also 0 so जेतेबेले change in quantity तामाने एथर हम कौन बुझिले चेंज इन क्वांटिटी जदि किसी चेंज होनी क्वांटिटी रे प्राइस रे जते चेंज हेले प्राइस बढ़ू कि प्राइस कमू व्हाट एवर इट मे बी बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी जदि से पर्टिकुलर कमोडिटी रो डिमांड रे किसी चेंज होनी प्राइस कमिले बा प्राइस बढ़िले इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज बट स्टिल द डिमांडेड क्वांटिटीज रिमेन्स सेम सही कंडीशन रे हम कहूचे जे चेंज इन क्वांटिटीज इज जीरो से केस आम कहे द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी विल बी जीरो आउ एटा को आम कहे परफेक्टली इन इलास्टिक ए कंडीशन टाक आम कहे परफेक्टली इन इलास्टिक ए कंडीशन टा केते आसे परफेक्टली इन इलास्टिक कंडीशन टा सो जदि एग्जांपल मत पचर हुए जे प्राइस आइदर बढ़िला किंबा कमिला किंतु क्वांटिटी डिमांड रे किसी चेंज होनी ओके से कंडीशन टा केते आसो फॉर एग्जांपल सपोज मेडिसिन ओके मेडिसिन सपोज जन को कैंसर होइए कि सपोज जन को ज्वर होइए प्राइस बढ़िले बा कमिले ताकू जेतिकी डिस्क्राइब कराई गोटे पेसेंट को सपोज ज्वर हेले गोटे टैबलेट पर डे खाइबा उचित गोटे टैबलेट से खाइब प्राइस बढ़िले भी से टैबलेट किनिबा बाउंड प्राइस कमिले भी से गोटे से टैबलेट किनिबा बाध्य कहीं जेहेतु से ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज ही हैज टू टेक द मेडिसिन सो प्राइस बढ़ू बा कमू ही विल परचेज करेक्ट आउ गोटे थिंग अनदर आस्पेक्ट आम चिंता करवा जे कहीं डिमांड रे चेंज होनी सपोज तुमको गोटे ज्वर होती डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे जे यस मलेरिया है पर डे 1 टैबलेट प्राइस कमिला बोले तो तुम 5टा टैबलेट खाइबनी जी टैबलेट कहुई तो यू हैव टू take that much so you can't increase or decrease so change in quantity will not be possible for this particular medicine okay suppose gas तुम मैंने गैस यूज कर गैस प्राइस कमिगला बोली तुम तो गैस बेसी जानी जी तुम धर भात रोषे कर कि डाली कर कि एनी भेजिटेबल्स बनाऊ कि नॉन वेज आइटम बनाऊ जी गैस जाऊँगी प्राइस जब गैस कमिला बढ़िला तुम बेसी गैस यूज हो कि कम गैस यूज हो सो गैस इसेंशियल प्रोडक्ट जो गैस हो कि आमर मेडिसिन हो कि प्रोटीन फूड जमीक मिल्क ओके जब प्राइस कमिला 10 लिटर तो क्षीर पी पारे सो ही हैज टू टेक दैट मच सो ये सब जिन जिते इसेंशियल सेते सी नॉन इलास्टिक आई मीन परफेक्टली इन इलास्टिक करेक्ट ओके एबे देखिबा हाईली इलास्टिक आमर डेफिनेशन अनुसार चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 से केस आम कहे हाईली इलास्टिक केतेबेले ग्रेटर देन 1 हम देख यहाँ हूँ क्वेटेंट एंड दिस इज द डिनोमिनेटर जितेबाला धर आम पाखे 10टा चॉकलेट अच्छे आउ 5टा पिला अच्छा 10टा चॉकलेट्स अच्छी 5टा पिला अच्छा तो चॉकलेट संख्या पिला संख्या ठार अधिका हो तो जणिया के पड़ो 2टा लेखा पड़ो जदि 5टा पिला अच्छा आ मो पाखे 2टा चॉकलेट अच्छे
तो सेतବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ସୋ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଇବେ ସୋ ସେଇଟା କମିଯିବ ତ କେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଉପରଟା ବଡ଼ ଥିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଉପରେ କିଏ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ କନସେପ୍ଟ ସୋ ଏଇଟା ବୁଝିଗଲେ ତୁମକୁ ଯେତେଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଛି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଇଜି ଟୁ ରାଇଟ୍ ବିକଜ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଡ଼ ହେବ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଆଉ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ପାଖରେ पॉजिटिवली देवी मैं दुईटा देवी तीन टा देवी चार्टा देवी मो चॉकलेट जिते अधिका हम मुझे अधिका देवी तो ये मोर पॉजिटिव वैल्यू आसो जब मो पाखे चॉकलेट कमिज उपरटा कमिज तो तलटा यदि बढ़ीज उपरटा कमु बा तलटा बढ़ू सेम थिंग से केस मोर हम कौन कमिज आई मीन जो कम ये गोटे नेगेटिव वैल्यू आसो आ से नेगेटिव वैल्यू को आम कौन कह लेस इलास्टिसिटी जब पॉजिटिव आसला हाई इलास्टिसिटी उपरटा अधिका रहा हाई तो चेंज इन क्वांटिटी इज large than change in price okay so एतरे हम देखले हाईली इलास्टिक आउ लेस इलास्टिक सो हाईली इलास्टिक केतेबेले होची सपोज फॉर एग्जांपल मैं एटा डिलीट कर दोची हाईली इलास्टिक आई मीन ग्रेटर देन 1 केतेबेले होची q by p इज ग्रेटर देन 1 केतेबेले होची जेतेबेले चेंज इन डिमांड ता अधिक होची चेंज इन डिमांड ता हाई हे जाउची ओके को केस रे सपोज गाड़ी धर गोटे 4 व्हीलर प्राइस बर्तमान किनले 10 लाख पड़ुଛି जदि सपोज सेटा 5 लाख होगा तो जिते मैंने लोअर इनकम ग्रुप जो लोक मैंने अच्छा दे विल ट्राई टू परचेज सम व्हीकल्स 4 व्हीलर्स सो से केस कौन कर ना चेंज इन डिमांडटा बढ़ीज ओके जदि सेमती धर गाड़ी रेट बहुत बढ़ीगला तो जी लोक सब मिडिल क्लास लोक गाड़ी किणवा चाहूले सो से डिमांड कमीदेवे आउ से किनीपारे जेहेतु कैपेसिटी बियॉन्ड पड़ेगा प्राइसटा तो से चेंज हो आइदर इट मे बी पॉजिटिव चेंज और इट मे बी नेगेटिव चेंज बट देयर शुड बी ए चेंज जदि चेंज इन क्वांटिटी होगा अधिका सॉरी अधिका हो जाऊँगी तो सही केस आम कहे हाईली इलास्टिसिटी सो बेसिकली एग्जांपल कहले ऑटोमोबाइल सेक्टर हो पारे किंबा आमर लग्जरी आइटम्स हो पारे किंबा जमती कि चा और कॉफी देखा कॉफी नॉर्मली जब सस्ता हो लोक मैंने प्रिफर करेंगे कॉफी नॉर्मल अदर जदि कॉफीर प्राइस बढ़ी जाइए तो लोक चा चलदेवे चाटा इज एसेंशियल बट कॉफी इज लग्जरी सो जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड एसेंशियल एंड लग्जरी केतबेले यूज कर तुम पाखे पैसा अधिका इनकम होची प्राइस क्वांटिटी प्राइस कमी जाऊँगी तुम पाखे पैसा इनकम बढ़ी जाऊँगी किंबा प्राइस कमी जाऊँगी से केस तुम से क्वांटिटी डिमांडटा बढ़ी जाऊँगी तो that is called luxury items and luxury items produce more elasticity okay correct तो वीडियोटा बहुत लेंथी हो गलानी तो डायग्रामटा को गोटे सेपरेट क्लास करी बट फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर वेरी रिसेंटली आर दे आर गोइंग टू अटेंड द एग्जाम से गोटे इजी ट्रिक कही दूसरी okay so this is the quantity आप गोटे सेपरेट वीडियो करवा आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस केमती तुम इजिली डायग्राम ड्रॉ कर पार आ आश्योर करुँच वंस यू विल सी दैट वॉच दैट वीडियो यू विल बी मोर आई मीन कॉन्फिडेंट हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स आई मीन the what we can say it is chart okay I am not getting the proper term you just put in comment section okay so basically जितेबाला E इक्वल टू 0 जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आम कहे जो परफेक्टली इलास्टिक दैट इज ए स्ट्रेट लाइन देन जब मुझे टिके तेच्छा करी इट विल बी E इज लेस देन 1 आउ टिके जदि चेष्टा करी E इज इक्वल टू 1 आउ टिके जदि चेष्टा करी E इज ग्रेटर देन 1 जदि मुझे पैरेलल लाइन करी क्वांटिटी सहित ये लाइनटा पैरेलल हो से E इक्वल टू इनफिनिट तो जस्ट फॉर ट्रिक मुझे डायग्रामटा करदेली नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच हाउ टू पोर्ट्रे और हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स ओके Thank you so much for watching this video. Okay, please like and subscribe and comment if you find it is necessary. My health is not good today, so my voice is not up to mark. So try to compromise. Thank you so much. Have a good day.